Focusing on the state of Karnataka and what the political parties are saying there. The piece of breaking news coming in, even as the Congress is struggling with the controversy over V.K. Hariprasad Gowda's comment, Chief Minister Siddaramaya's son and former MLA Yatendra Siddaramaya has triggered another controversy. Now he goes on to say that India will become like Afghanistan and Pakistan and will have dictatorial regimes if the country becomes a Hindu Rashtra. He's also blamed the RSS and BJP for attempting to make India a Hindu Rashtra and asked people to be careful when parties do politics of religion. We'll try and play out that soundbite for you, but let me check if my colleague Harish is with us on the broadcast. Let's first listen in to what Siddaramaya's son had to say. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಾದರೂ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಪಾಯ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರಬಹುದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇರಬಹುದು, ಇರಾನ್ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಯಿತು. ದೇಶ ವಿನಾಶ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಪಾಯ ಈಗಿನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರಾದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದಂತಹ RSS ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ದೇಶನ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. Cutting across to my colleague Harish, who's joining us live and getting us more details on this entire story. Harish, just more political context to the statement from Mr. Siddaramaya's son. Well, he's talking about what's happening in Karnataka over the last few days or so, whether it's the issue of Hindu Karsevak being booked after 32 years after that incident, or what we have seen over the last 2-3 days when several of them have come and questioned whether Ram Mandir alone can give development. This was one of the comments by a Congress MLA, or later on saying that Siddaramaya is like Ram. So there's a lot of politics that's happening around Ram Mandir. Perhaps you have Yatendra Siddaramaya trying to say that there shouldn't be politics over religion. That's something that his father, Chief Minister Siddaramaya, also had said earlier in the day. But in a bid to explain that to the people in this particular event, he went on to one quote Babasaheb Ambedkar. Apart from that, he also said, if we head towards a Hindu Rashtra, we'll end up becoming like Pakistan, Afghanistan, Iran and several other countries. We will have a dictatorial regime and that would be the end of India's growth story. That's his comment. But remember two aspects here. One, Congress, especially in the run-up to the previous assembly election earlier last year, was very careful not to get into the debate or narrative of religion because they believe that that would benefit the BJP, and they're very clearly told that their leaders need to be away from it, make any comments related to religion. But in the run-up to the Lok Sabha election now, we are seeing almost all of those Congress leaders coming out and giving such statement, and at the same time giving ammunition to the BJP to corner the Siddaramaya government. On the other hand, the timing is also something that one needs to question. This is coming in even as the country is gearing up towards the Pran Pratishthan in Ayodhya on 22nd. Why a comment like this is required now, especially when the state Congress unit is struggling to justify the comments that have come in earlier, whether it's V.K. Hariprasad talking about Godhra-like situation in Karnataka being a possibility, or the comments we have seen earlier in the last 2-3 days. Harish, it's interesting that you talk about the timing of this statement. One arrest in Karnataka also triggered a lot of controversy, especially the manner in which that arrest was made. Today we also had a statement coming in that there could be a riot-like situation that can prevail in certain parts of the country. And all these statements come at a critical juncture ahead of the Pran Pratishtha ceremony. Could you also just take us back in time a few weeks earlier in the kind of statements, a series of statements that we have seen in the run-up to the inauguration of the Ram Temple? Absolutely. Look at where it all begins. Siddaramaya talks about giving 10,000 crores to minorities by the end of his tenure in the budget every year. And the BJP had already started calling this a government for Muslims, for minorities. And we have seen in the last 2-3 weeks
comments coming in from within the government, whether ministers or MLAs, in a way helping BJP to further this narrative, whether it's one of their MLAs coming out and saying that just with Ram Mandir the country can't ensure development, and others saying that if you do not call Siddaramaiah for the event, for the Pran Pratishthan, then it's a disrespect to 6 crore Kannadigas, and Anjaneya coming out and saying for us Ram is Siddaramaiah. So all these comments had given enough in a way fodder to the BJP to corner the Congress government, and we do not see an end to that. We continue to see Congress leaders every day coming out giving these controversial statements. Malvika Avinash of the BJP is joining us on the broadcast. Malvika ji, namaskar. Thank you so much for joining us on the Nation at 5. There's a statement coming in from Yatendra Siddaramaiah, and he goes on to say that India will become like Afghanistan or Pakistan, also blaming the RSS for pushing a Hindutva, a political Hindutva ideology and agenda in this country. Your thoughts on it, ma'am? You see, Mr. Siddaramaiah, while he was Chief Minister between 2013 and 18 in Karnataka, he adopted a anti-Hindu policy against the majority community of this country with a view to appease the minorities. He started something that never existed in Karnataka in the name of Tipu Jayanti. I think that was the beginning, and thereafter he presided over several murders of Hindu karyakartas, then set free people accused of killing Hindu karyakartas belonging to the PFI and SDPI. So this has been a pattern of Mr. Siddaramaiah, which has furthered yesterday when a car sevak in Hubli, in a 31-year-old case, was arrested. Shrikant Pujari was arrested, and therefore the BJP, in order to get justice for the car sevaks, has been protesting all over the state against this act of Mr. Siddaramaiah. So there is a kind of desperation that the entire world is celebrating the Ram temple in Ayodhya, especially on the 22nd when there is going to be the Pran Pratishtana of Ram Lalla. So this being the atmosphere in the country, the Congress party is both desperate as well as intolerant of this rejoicing of the Hindus, and hence these kind of completely irresponsible remarks as well as those against the Hindu community. All right, Malvika ji, thank you so much for joining us on the broadcast. Thank you so much for sharing your perspective. Let me cut across back to my colleague Harish, who's with us on the broadcast. Harish, you were pointing out to the recent series of statements that we have seen. Do you sense any particular reason why the Congress party has decided to pick on this particular issue in a far more aggressive manner than we see the National Party High Command really taking up? The Party High Command in Delhi is yet to decide whether they will go for that ceremony or not. They have maintained a very respectful tone and tenor ahead of the Pran Pratishtha ceremony of the Ram Temple inauguration, abstaining from any kind of damaging statements in the run-up to 2024 elections. But the state Congress, especially in the state of Karnataka, has taken a far more sharper position. Is there any particular reason for that? Well, looks like at least the leadership here in Karnataka, it's divided here in Congress. You do not see similar comments coming in from DK Shivkumar or his camp, but all these comments coming in are largely MLAs who are backing Siddaramaiah, seen as MLAs in his camp, who are coming out and giving these statements. The fact that the Chief Minister himself is defending some of these statements makes it difficult for ministers to take any other line. For example, when the Chief Minister in the day earlier says that all the protests by the BJP is in fact over religion, it's politics over religion, or justifying the arrest of the Karsevak in a 31-year-old case, the cabinet has no other option but to defend the Chief Minister and the line that he has taken. Some of them have gone overboard with that. In fact, if you look at the statement by B.K. Hariprasad, many wonder if a senior Congress leader like B.K. Hariprasad doesn't anticipate the kind of backlash a statement like the one that he's given in the day earlier would generate. Obviously, he would have thought through. So clearly, Congress in a self-damaging mode here in Karnataka. They were very clear ahead of assembly elections that they do not want to trigger a debate on any communal issue, but we have seen in the last week or so the Congress giving enough ammunition to the BJP. Now there could be multiple analysis of this. One, many believe the fact that the JDS has gone with the BJP now, the Congress knows that there is an empty space, anti-BJP space in the state,
that will consolidate in favor of Congress, and that's the reason why the Congress is aggressive in the run up to the Lok Sabha election. Also the fact that the Muslims had in a way completely backed the Congress in the 2023 assembly election here. The Muslim vote share for JDS went down and it transferred to the Congress. Many believe that's another reason why you see the Congress going overboard, appeasing them, or in fact taking some of these communal issues. How will it pan out? Will it help the Congress in any way in Lok Sabha election, where the whole game is something totally different than what we have seen in assembly election? Yeah. That's something that will become very clear in a few months from now. All right, Harish Upadhyay getting us all that perspective. Harish, please stay with us on the broadcast. Sanket Yanagi of the Congress Party with us on the show. Sanketji, namaskar. Thank you so much for joining us on the show. The fact that there is a statement coming in from Yatendra Siddaramaiah, who goes on to make a statement and says that India will become like Afghanistan and Pakistan. Don't you believe that's an argument overstretched? And that perhaps is an alarmist statement also in many ways. Do you consider that statement responsible enough? First of all, it is his personal statement. And secondly, it is a known fact that India is known for unity in diversity and having so many cultures, diversified languages and diversified religions also in the country. India is not consisting of one community or one section of the society. And everyone is living happily in this country. That is why it is known for unity in diversity. It cannot be identified with one religion or one community or one section of the society. It has to be identified with everyone. Every contribution has been made by every part of the country. And every citizen belonging to every community or section of the society has contributed to the extent possible for the growth and welfare of the society. India so far has grown only because of unity in diversity, and it cannot be identified unlike other countries. That is what is the hallmark of this country, which has led to the developmental agenda and development to such an extent competing with the rest of the world today. And the success and the reason for success of India is because of this. No, sir, I agree. I mean, it's a secular democracy. It's a modern, secular, diverse democracy. And a democracy like no other across the world by the sheer... absolutely, sir. No, sir, but he wasn't speaking about religious fundamentalism. Otherwise, I don't think we would have been having this discussion. No, let us understand. What he means is any religious fundamentalism or any state or any country which is suffering from religious fundamentalism has led to the demolition or destruction of that country in one or the other way. That has been the history, not of India, but of the rest of the countries across the globe. Sir, I get the point, and I can't disagree with you fundamentally on the aspect that religious fundamentalism is the antithesis of democracy. That's basic political science. But what I'm saying is that to carve out the argument and speak of Hindu Rashtra, we condemn the statement Islamic terrorism. Then why is it that we are so freewheeling when it comes to the terms like Hindu Rashtra and Hindu terrorism? I believe that should be used far more responsibly. But thank you, Mr. Sanket Yanagi, for joining us on the broadcast. I apologize, sir. That's all the time that I have. Let's also once again listen in to what Mr. Siddaramaiah's son really said, and then we move on to other stories. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಾದರೂ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಪಾಯ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರಬಹುದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇರಬಹುದು, ಇರಾನ್ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಯಿತು. ದೇಶ ವಿನಾಶ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಪಾಯ ಈಗಿನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರಾದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದಂತಹ RSS ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ದೇಶನ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಗಳಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು.
Let's talk about another interesting story, the Citizenship Amendment Act that was passed by Lok Sabha and Rajya Sabha, given assent by the President back in 2019, but yet has not been notified, which means the rule pertaining to the Act has not been notified and it hasn't become a reality in the country. Top sources within the government indicate to us that CAA will soon be implemented. There would be an online portal that will aid the government in implementing these new norms. The government goes on to say that CAA is the law of the land and shall be implemented. Earlier, we had Union Home Minister Amit Shah, who had made a statement in the state of West Bengal saying that CAA ought to be implemented and nothing can stop the implementation of the Citizenship Amendment Act. Listen into the voices and reactions. पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है शरणार्थी जो आए हैं उनको सीएए के माध्यम से नागरिकता दे दी। और दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीएए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीएए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion. And please understand that CAA must be read with and understood with NPR NRC, which will lay down conditions of the to lay down conditions to prove your citizenship of this country. And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. It is unconstitutional because it is made on religion. Secondly, it has to be understood with NPR NRC. अब ये साफ जाहिर है कि शांतनु ठाकुर जो बंगाल से निर्वाचित हुए हैं, भाजपा के सांसद मंत्री भी हैं, वो दिल्ली में कहते हैं एक बात और बंगाल में कहती है दूसरी बात। ये सीए को लेके है। वो बंगाल में जब रहते हैं तब वो बहुत दुखित होते हैं कि भाजपा जो है सीए को आगे नहीं बढ़ा रही है, लेकिन दिल्ली में जाके वो कहते हैं कि हमने तो ऐसे कभी नहीं कहा कि सीए को लागू किया जाएगा। हमारी नेत्री ममता बनर्जी, इस राज्य के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सभानेत्री जो है, साफ सुथरे भाषा में उन्होंने कहा कि सीएए बंगाल में नहीं लागू होगा। It's very clear for all these years since the law has been passed, the rules were framed, we were told, but they were not notified. Clearly, they want to notify these rules just before the election, to use this as a political weapon in order to gain in the elections through communal polarization, sharpening communal polarization. So that is the clear-cut aim. So this is absolutely utilizing the elections, utilizing the rules declaration as a tool for some electoral gains. We'll continue tracking that story and much more here on CNN News 18 on the other side of a quick break. Stay tuned, stay with us. Modi
没办法，其实真的跟快上天是一样的。道路全部都已经震得已经拱起了，地震所造成的破坏已经完全通不了车了。现在有的个别的已经停水停电了，家人们现在正在抢修。有一些老年人呐，或者说有一些家里有车的都来日本5年多，第一次能感受到这么大的地震，有20多次余震吧。生活上的物资啊，超市啊很多呀，这面包。所以说这次地震呢，造成的伤害还是比较大的。这是日本的属于寺庙，家人们给大家看一下啊，损毁的非常严重。现在很多人现在在这儿抢修，在商量对策。这条路已经彻底瘫痪了。
班吧。其实真的跟快上天是一样的。道路全部都已经震得已经拱起了，地震所造成的破坏已经完全通不了车了。现在有的个别的已经都已经。Well, let's talk about the breaking bit of development coming in. This is a recent attack that has been made by none other than Prime Minister Narendra Modi. The Prime Minister has taken pot shots at the INDI alliance, once again calling out the Congress and the left parties for insulting the Astha of the people. The Prime Minister was making this address in Kerala. Listening to what the Prime Minister said. केरला में लंबे समय से लेफ्ट और कांग्रेस पक्ष और विपक्ष का ढोंग रचते रहे हैं, जबकि ये हमेशा से एक ही थे। ये सिर्फ नाम के लिए दो पार्टियां हैं। केरला में करप्शन हो, क्राइम हो या परिवारवाद, ये दोनों सब कुछ मिलकर के करते हैं। अब इंडी गठबंधन बनाकर इन्होंने घोषणा कर दी कि इनकी विचारधारा और इनकी नीतियों में कोई अंतर नहीं है। अब केरला की जनता को भी साफ पता चला है कि केरला का विकास अगर कोई कर सकता है तो वो बीजेपी है, एनडीए है, लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन यानी इंडी अलायंस को केरला में भी बीजेपी ही हराएगी। इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। त्रिशूलपुरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबरीमाला में भी जिस प्रकार की अव्यवस्था सामने आई है उससे भी श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा आई है। ये यहां की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। Cutting across to my colleague Pal, who's joining us on the broadcast, getting us more details on that entire story. Pal, an attack coming in from none other than Prime Minister Modi and cornering the left and the Congress, especially in the position that they have taken ahead of the Pran Pratishtha ceremony. The left parties have come out and really said that they will not go even if they have been invited to the ground. That is something which is told here. Also said that over a period of time, only violence has been the way that the left and the Congress party really have had an alliance. Obviously, it's hit out at the opposition Gadbandhan that they try to stitch together, and also said that, temples and Astha of the public should not be insulted. But this is exactly what has really happened. So obviously, just about a couple of weeks to go before that big Ram temple, consecration which is going to take place, where Prime Minister Narendra Modi will also be present, he's hit out at these opposition parties, essentially saying that it is a very, very suitable, agenda as far as that is concerned. The Congress party in particular is the party that is known to actually, deviate from issues to issues, and that's something which the Prime Minister really pointed out over here, saying that they've taken control of the temples, they've looted the temples, they've looted the Astha, and at the same time insulted Hindus as such. Because remember, like we were reporting earlier, that Kerala is one state where the BJP really, really fancies its chances, given the fact that the Prime Minister brought out so many development projects now. Also, the RSS has been constantly working on the ground in Kerala, has been witness to a lot of bloodshed. Several workers of the RSS have been
killed and injured, in the various violences that one has seen over the period of time. So, with the focus on the south of India that the Prime Minister Narendra Modi is spearheading right now, the BJP will consider this to be a big push. All right, thank you, Pal, for putting all of that into perspective. We'll keep coming back to you for more on that story. Let's move on and let's talk about the statement coming in from UP Chief Minister Yogi Adityanath. Now, at a time when there are a lot of attacks happening on Sanatan Dharma, UP Chief Minister Yogi Adityanath goes on to say that Sanatan Dharma or Hindu religion is one of the religion that has endured a lot of conflict and conquest attempts that were made in the past and yet has persevered through them. Let's listen into what UP Chief Minister had to say. धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। बाकी पर्सनैलिटी हो सकती है, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है, बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके, वह बना रहा है। और इसीलिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। Cutting across to my colleague Amit Singh, who's joining us on the broadcast. Amit, UP Chief Minister योगी आदित्यनाथ का बयान आ रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने उन सभी लोगों पर प्रश्न उठाए हैं और पिछले कुछ समय में हमने देखा भी है बहुत सारे राजनीतिक और प्रतिद्वंदी दलों ने बहुत सारे ऐसे भाषण दिए, खासकर लेफ्ट के नेताओं ने, जिससे सनातन धर्म पर सवाल उठे हैं। कर्नाटक से बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से राम मंदिर का 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और उसको लेकर लगातार जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, लगातार जिस तरीके से बीजेपी पर हमले हो रहे हैं, लगातार ट्रस्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि बीजेपी को के कहने पर केवल न्योता बांटा जा रहा है 22 तारीख का, तो जाहिर तौर पर उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भाषण दिया और कहा है कि केवल एक ही धर्म इस दुनिया में है, वो है सनातन धर्म। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से लगातार साउथ की तरफ से स्टालिन का बयान आया सनातन धर्म पर। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के नेता, जो लगातार सनातन धर्म पर सवाल उठाते आए हैं। इसके अलावा भी तमाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरीके से सवाल उठाते रहे, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सबको जवाब दिया है और सनातन धर्म को लेकर बोला है, क्योंकि जिस तरीके से 22 तारीख का कार्यक्रम होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, और मुख्यमंत्री ने बीते कल ही एक हाई लेवल मीटिंग की थी अपने अधिकारियों के साथ। उसमें उन्होंने एक साफ संदेश दिया है कि जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, ग्लोबली उत्तर प्रदेश को इस पे एस्टैब्लिश किया जा सकता है, ग्लोबल मानचित्र पर। तो जाहिर तौर पे राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर सख्त काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और यही वजह है कि वो विपक्षियों पर लगातार हमले कर रहे हैं, और आज का बयान भी इसी कॉन्टेक्स्ट में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, ये सारी जानकारी हम तक लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग अस ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। लेट्स मूव ऑन टू अनदर पीस ऑफ ब्रेकिंग न्यूज व्हिच इज कमिंग इन नाउ। दिस इज अबाउट द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड द इन्वेस्टिगेशन हैपनिंग as far as the murder of Rajput Karni Sena Chief Sukhdev Singh Gogamedi is concerned. They have arrested another key suspect during extensive raids across Haryana and Rajasthan in the case relating to this particular murder. The arrest today takes the total tally of the arrests so far to 9 people. NIA teams also made exhaustive searches at the premises and seized a large number of pistols, ammunition, digital devices including mobile phones, SIM cards and other devices as well. My colleague Shankar Anand will join us on the broadcast and get us more details. Shankar, हमें इस तफ्तीश के बारे में बताइए, और ये जो लेटेस्ट अरेस्ट हुआ है, किसको अरेस्ट किया गया है इस इंसान का, अगर आप बैकग्राउंड या बाकी कोई डिटेल्स हमें बता सकें तो। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा आज 31 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, और इसी मामले में सर्च ऑपरेशन के दौरान काफी भारी मात्रा में राजस्थान से अवैध तौर पर जो हथियार जो बनाए जाते हैं, वो हथियारों को बरामद किया गया है, और इसी हथियार को उपलब्ध कराने वाले आरोपी अशोक को आज जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अशोक की अगर बात करें तो यह राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला है, और अशोक के खिलाफ आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही अन्य कुल 31 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। जिस तरह से राजपूत करनी सेना के जो अध्यक्ष रहे थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, तो उसकी जो हत्या को अंजाम जिस तरह से बकायदा दिया गया था, तो इस मामले में
हालांकि शुरुआती तौर पर राजस्थान पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, लेकिन 11 दिसंबर को इस केस को एनआईए को सौंप दिया गया था और एनआईए ने इस मामले पे आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जो अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कि कुछ आरोपियों को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा गिरफ्तारी हुई। लेकिन अशोक कुमार की जो आज गिरफ्तारी हुई है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर इससे इस मामले में जब विस्तार से पूछताछ किया जाएगा कि किस तरह से ये गैंगस्टर के साथ में इसके संपर्क रहे हैं और किस तरह से कई अन्य आरोपियों के साथ में इसके संबंध रहे हैं और किस तरह से हथियार उपलब्ध कराना इसका काम रहा है, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से इससे पूछताछ की जाएगी और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। और अशोक कुमार के बारे में जो जिक्र है, रोहित गुदारा नाम के जो आरोपी है, जो हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, उसके साथ जब पूछताछ की गई थी तब उसने ही इस मामले में इसका नाम सामने लिया था। उसके बाद अशोक कुमार का नाम सामने आने के बाद आज उसके खिलाफ बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, ये सारी जानकारी हम तक लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग अस डिटेल्स ऑफ दैट एंटायर इन्वेस्टिगेशन। Well, there's a thick smog that has engulfed the national capital that continues to dominate the weather situation here. At the same time, the visibility has gone really down. The temperatures have decreased. It's a strong winter that we are experiencing here in the Delhi NCR region. Let's have a look at this ground report that my colleague Anshul gets for you. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. The famous Delhi ki sardi has finally arrived and it's likely to stay over the next few days. This morning, Delhiites not only woke up to biting cold but also dense fog that had engulfed the entire national capital, and not only the national capital but also the entire northern India. Due to the low visibility that happened this morning, 26 trains got delayed which were inbound to the national capital, because of which the people had to face a lot of issues. Not only this, but yes, the manner in which the weather has gone cold is definitely raising a lot of concern for the people, because remember, since today, especially today morning, we have seen that how the weather has changed significantly out here in the national capital. This morning itself, the minimum temperature settled somewhere around the 7 degrees Celsius mark, and according to the weather department, it is expected that over the next few days, the weather is going to remain cold. Well, as we slip into a short break, before that, a special report as India ushers in a new year. History TV 18 is inviting its viewers to travel back in time. And this is to uncover the mysteries and marvels of the forgotten past, with a little known insight from the best-selling author and renowned historian, William Dalrymple. India, Marvels and Mysteries. It premieres on the 4th of January. Every Thursday and Friday 9 p.m. only on History TV 18. You can watch a glimpse of what to expect in this teaser. Please have a look. Thousands of years in the making, unearthed from the depths of the past. Along lost trails, amid legends and lore, are untold histories of India. Her marvels and mysteries. India Marvels and Mysteries with William Dalrymple starts 4th January every Thursday and Friday 9 p.m. on History TV 18. Brought to you by 家人们现在正在抢修，有一些老年人呐，或者说有一些家里有车的都来日本5年多，第一次能感受到这么大的地震。有20多次余震吧，生活上的物资啊、超市啊很多呀，这面包，所以说这次地震呢，造成的伤害还是比较大的。这是日本的属于寺庙，家人们给大家看一下啊，损毁的非常严重。现在很多人现在在这儿抢修，在商量对策。这条路已经
经彻底瘫痪了。没办法，其实真的跟拍相片是一样的。道路全部都已经震得已经拱起了，地震所造成的破坏已经完全通不了车了。现在有的个别的都已经停水停电了，家人们现在正在抢修。有一些老年人呐，或者说有一些家里有车的都来日本5年多，第一次能感受到这么大的地震，有20多次余震吧。生活上的物资啊，超市啊很多呀，这面包。所以说这次地震呢，造成的伤害还是比较大的。这是日本的属于寺庙，家人们给大家看一下啊，损毁的非常严重。现在很多人现在在这儿抢修，在商量对策。这条路已经彻底瘫痪了。
Welcome back. You're watching The Nation at 5. Let's have a quick check of some key stories from across the country. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. A full dress parade rehearsal was conducted at Kartavya Path today ahead of Republic Day 2024. Security forces were seen marching to drumbeats in chilly and foggy conditions. India will be celebrating its 75th Republic Day this month. Around 2,000 cadets from across India will be participating in the month-long NCC Republic Day camp this year. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren has written to ED in response to the 7th summons that were issued to him, alleging that it was illegal. He has raised questions against the investigation, saying it's biased and media trial is being conducted against him. He has also said in his reply that he has given the details of his properties and accused the ED of working to destabilize the state government. More than 14 are feared dead in a fatal accident that took place in Dergaon in Assam today. A bus carrying around 45 passengers to Tinling Mandir was hit by a coal truck. The deceased include both children and women. 30 passengers are being treated at the Jorhat Medical College. Delhi witnessed a very dense fog today. The minimum temperature in the city decreased and hovered around 6 to 9 degrees Celsius. In other parts of North India, such as Punjab and Haryana, cold conditions are likely to prevail till the 5th of January. Train operations were affected as dense fog engulfed several parts of North India, including Delhi, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, leading to low visibility. And the Supreme Court pronounced the judgment in the Adani Hindenburg case. The court rejected the petition to transfer the probe to the CBI, directed the market regulator SEBI to finish the remaining 2 probes in the next 3 months. Well, let's talk about the summons that were issued to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Another round of summons for Mr. Kejriwal, and he has decided to skip those summons, citing his schedule and saying that he's busy with the duties as the Chief Minister and as the convener of the Aam Aadmi Party. These summons have been issued to him in the Delhi excise policy scam, which has come to haunt the Delhi government. Top netas, including Manish Sisodia, Sanjay Singh, have been under the custody of the Enforcement Directorate and CBI, facing investigation right now. Mr. Kejriwal, though, is not formally named as an accused in this matter. His name does surface in the conversations that have been cited by the Enforcement Directorate and the CBI in their chart sheets and the documents that have been filed before the court so far. The voices and reactions on the story, as the AAP calls it, a political vendetta. सौरभ जी, 3 समन ईडी ने मुख्यमंत्री जी को भेजे, सवाल जवाब के लिए नहीं गए ईडी दफ्तर। अब आपको नहीं लगता थोड़ा विरोधाभास है दोनों चीजों में? एक तरफ आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम जांच में सहयोग करेंगे जांच एजेंसियों का, लेकिन पेशी में नहीं जाएंगे। नहीं, मैं ये समझता हूं कि सहयोग का मतलब ये कहीं नहीं है कि हम गिरफ्तार हो जाएं और सालों तक जेल के अंदर सड़ें। आपको जो पूछना था आपने पार्टी में पूछा, आपके पार्टी के अलग अलग लोगों को बुला के पूछ चुके हैं। पार्टी के अंदर जो पोस्टर लगाता है उस तक से तो आप पूछताछ कर चुके हैं। अब आपके लिए क्या बचा है? 1.5 साल हो गए आपको इन्वेस्टिगेट करते हुए। ईडी सीबीआई दोनों इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। दर्जनों लोगों को आपने गिरफ्तार कर रखा है। चार्जशीट आप दायर कर चुके हैं। अब कौन सी स्टेज है कि अब आप अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करना चाहते हैं? साफ बात है, मुख्यमंत्री जी को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव की कैंपेन से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जेल में रहें, लोकसभा चुनाव के अंदर कैंपेन ना कर पाएं, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा हो, सिर्फ इसलिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा है कि ईडी अगर कानूनी तौर पर नोटिस भेजती है
हम हर तरह से उसका सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर बार बार ईडी से नोटिस जारी करवाती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के नोटिस का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है। आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं जिनको ये गलत फहमी है, ये गुमा है कि मैं कानून से ऊपर हूं। ये कहना गलत नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। ठीक है, जो भी किसी का संदेह हो ईडी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, जो भी हो वो अलग है, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया होती है, वो तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से इन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया है, अन्यथा किसी चीज को एक राजनीतिक पहलू दे रहे हैं। हम मानते हैं कि कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को देखा गया कि वो राजनीतिक रूप से काम करती है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया वो तो आपको करनी है। अरविंद केजरीवाल क्रिमिनल और भगौड़े की तरह क्यों पेश आ रहे हैं आप? तीसरा समन जारी हुआ है ईडी की तरफ से। आपने पहले समन पर बहाना बनाया कि देखिए मुझे चुनावी कैंपेन में स्टार प्रचारक के रूप में जाना है, नोटा से कम वोट आए आपके तीनों राज्यों में। उसके बाद आपने बहाना बनाया विपासना का, कुशासन करके विपासना पे चले गए। अब तीसरी बार समन जारी हुआ है, क्यों जाने से कतराते हैं? जाइए और अपना पक्ष रखिए। आप जब अन्ना हजारे जी के आंदोलन में थे तब तो कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच, दूसरों से तो इस्तीफा मांग लेते थे, आज तो जांच में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हो रहे। Well, ahead of the Pran Pratishtha ceremony in Ayodhya on the 22nd of January, a devotional song by Swati Mishra has gone viral online and has earned a lot of accolades and applause. None other than Prime Minister Narendra Modi has appreciated the devotional song that has been put out by the singer. My colleague Anand Narasimhan in conversation with Swati Mishra. राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, हो मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। क्या बात है, क्या बात है. There's a reason why she's gone viral on Instagram, isn't it? There's a reason. And Insta Reel se real is fantastic. Swati, thank you so much for doing this for us and for joining us here. से बस ये जानना चाहता हूँ स्वाति जी, but who wrote this song for you? और कब आपने कभी सोचा था कि इतना आप पॉपुलर हो जाएंगे, ये गाना इतना पॉपुलर हो जाएगा? ये गाना ओरिजिनली प्रेम भूषण जी का है। वो जब भी रामायण पाठ करते हैं तो वो उसमें ये गाते हैं, तो मैं वीडियोस देखती हूँ शॉर्ट्स में, जैसे इनके वीडियोस देखती हूँ तो उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आते हैं। तो जब मैंने इतना प्यारा उनका गाना सुना तो मैंने सोचा कि ये गाना इतना अच्छा भजन है, ये फेमस क्यों नहीं है, ये लोग गाते क्यों नहीं है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि हमारी जनरेशन प्रेम भूषण जी को सुनती नहीं होंगी शायद, इसलिए इनके कलेक्शंस लोगों के पास है नहीं। तो बस मैंने सिंपली उस गाने को उठाया और मैंने सोचा कि इसको बनाते हैं, तो मैंने भेजा अपने जो भी म्यूजिक मेरा बनाते हैं उनको मैंने भेजा कि आप इसको ऐसा बनाओ कि इसको ना यूथ सुने, मतलब नई जनरेशन मेरे जैसे लोग सुने, क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो भी इंस्ट्रूमेंट पे गाने बनते हैं वो तो ट्रेडिशनल लोग, पुराने लोग तो सुनते ही हैं, ऐसा बनाओ कि नया लोग सुने। तो उस चक्कर में ये गाना, ये भजन ऐसा बन गया कि मतलब कौन नहीं सुन रहा है इसको। पर
ये किसके भाव से लिखा है कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे? तो कि ये शबरी के भाव से लिखा जा रहा है? हाँ अमी जी बताइए, किसके भाव से लिखा गया है गाना? जो भाव है, जो गाना सुना है, वो तो शबरी जी के ही भाव का है। और आपने जो टॉपिक की बात करी, आप सोचिए उनके जीवन में जितनी भी स्त्रियां आई, उन स्त्रियों ने उनसे बहुत प्रेम किया। उनके लिए वो ऐसे कहते हैं ना कि वो प्रतीक्षा करती रही उनसे मिलने की। तो ऐसे थे श्री राम, जिनके लिए उनके जीवन की प्रत्येक स्त्री उनकी कामना करती थी, उनसे प्रेम करती थी। स्वाति जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्यों भजन गाना चाहती हैं? Why do you want to, in your career, in your music? I know you sing a lot of things, you got a lot of, but why? What attracts you to this? अच्छा, मतलब ये क्वेश्चन काफी लोग पूछते हैं कि आप भजन क्यों गाती हैं, क्यों गाना चाहती हैं? Why do you want to sing भजन? एक्चुअली मैं बिहार से हूँ और यूपी बिहार में जितने लोग हैं रिलेट कर पाएंगे कि ये वांट नहीं है, ये आई थिंक ब्लड में है कि बचपन से हम हर चीज में पूजा देखते आए हैं। कभी देख रहे हैं मम्मी कुछ प्रसाद बना रही हैं, छोटे छोटे आटे के प्रसाद बना रही, मम्मी से पूछो मम्मी ये क्या है, तुम क्यों बना रही हो? तो बोलेगी मैया जी के पूजा हो गई, मैया जी के पूजा होता तो उसके लिए। कभी शिवरात्रि की पूजा हो रही है, कभी सूप डबडबा के और अलक्ष्मी को भगाते हैं सुबह सुबह। हर जगह पूजा है, हर जगह भक्ति है, तो भक्ति तो इनबिल्ट ही है। ऐसा लगता है कि ये हमारे ब्लड में है भक्ति। So it's not something that you want to do or have to do. It's just you do. It's just in my blood. Yeah. हो जाता है। जी। Welcome everyone. Thanks a lot for staying with us. You're watching Plain Speak with me, Shivani Gupta. Delhi Chief Minister and National Convener of Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal, has skipped yet another summons by the Enforcement Directorate in liquor policy scam case. This time, he has cited Rajya Sabha elections and preparations for Republic Day celebrations as the reason. But he has also not shied away from attacking the intent of the agency yet again. Aam Aadmi Party believes that the summons are illegal and the investigating agency plans to arrest Kejriwal in this case. BJP maintains that Kejriwal is running away from his accountability